Yes, ma'am, recording is done. Okay. So Got it, thank ma'am. you and good morning, everyone. Good Good morning. morning. Good To our morning. last session of this year, and we have all seen a phenomenal growth in our lives in terms of self development, mind process, thoughts. Um, we've expanded our desires, which is a very good thing. I think the belief जो हमने inculcate किया है इस पूरे साल अपने ऊपर the connection that we have established with ourselves, the relationships that we have improved with ourselves, because of which बहुत सारी चीजों से relationship different हुई है. So that's how beautiful it is. मुझे समझ ही नहीं आ रहा है. Then like I've been writing since 3:45 non-stop, and there's so much I have to do. Then today I thought that I'm going to spend my entire day in just reminiscing and reflecting on this year and saying thank you for the great growth that all of us have achieved. And yes, Delhi group yesterday had a blast of a party. Everybody was talking and nobody was listening. Everybody was talking. It was so much fun. So much laughter. There was so much of high energy that it was a huge place, where we had gone, जहाँ पे हमारे reservation था. And मतलब हमारी reservation was only for 12 people and eventually we were 25, maybe more. And so सुबह सुबह ये हो गया था कि अब क्या करें, because that place was not picking up the phone to take more reservations. Saturday Sunday उठाते नहीं है ना कोई भी अच्छी जगह. Saturday Sunday को already उनका rush ही होता है. But it was, everything went so smooth, amazing, and a great time. I think one of the best 3.5 hours all of us have spent together. And so I also was thinking, so I had got that hunch when I was meditating to actually give a little surprise to all of them, which I did. And so I mean, taking it forward from there. And well, in every city we all meet all the time, so it is like that. But yeah, I mean, like, thank you for everyone who made an effort to come, even if it was for, I think Ritu Kukreja ji actually could come only for say 20 minutes, but she did manage. She did not say no, and she came to see all of us and she captured that energy and went back. So her life is not going to be the same again for sure. I mean, like, because it was a very high power energy. When 17 seconds can make a difference, so you can imagine what 3.5 hours does. So thank you so much. And thank you, Priya, for coming all the way from Sonipat and spending time with us. It was great having you and meeting you for the first time in person. So thank you. And yes, today's chapter, the last day of this year, we are going to, like, it's a very significant chapter जो हमने अपनी life में अभी inculcate किया है, which is the magic wand. That is the purpose of our life. मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं इस साल, मैंने बहुत growth की है, अपनी खुद की work किया है अपने ऊपर grow करने के लिए, by reading multiple books that were heavily spiritual. Some of them were very deep diving into the real essence of life, learning from different mentors and learned people who are already enlightened. And one thing that I have been able to capture सारी किताबों से was that your life is meant to serve. Service, compassion, that's also for others. Service, that's also for others. Love, that is for yourself and the others. So love, compassion, and service has been the key holdings that we need to base our life on. Okay, so it's just love, compassion, and service. Jitni bhi kitabein, jitni bhi mentors, all the great people who've gone from where to where in life, they have all taught these three things: love, compassion, and service. Okay, so service means that it's our duty to serve others in our own way, even if it is making them happy, even if it is, like, in any way empowering them, in any way, again, तन मन धन अन, आप कैसे भी किसी की सेवा कर सकते हैं. इट इज नॉट ऑलवेज दैट आपको पैसे ही देके करने होते हैं. इट कुड बी जस्ट बाय गिविंग नॉलेज टू समवन, about something, or being there with someone when they're struggling, or just making that one call, or praying for the others, or whichever way, and unconditionally loving people. Okay, so that is what it is: love, compassion, and service. Love means accepting others just the way they are and wishing them well. And love, of course, is unconditional. It is not based on this person did this for me, hence I have to love. Even if this person did not
do anything for me. It is our duty to love that person and embrace that person in our life. And service is using your life for the others in whichever, in its own unique way. So these are three teachings and the key teachings that I have been able to funnel up by studying all those books that I still am currently. Also today also I was reading this Life a Celebration. Okay, so I'm yet to, it's a very deep dive chapter right now. So I'll definitely share with all of you once I've completed this book. And so that's how it is. And so today's chapter is in alignment with these three: love, compassion, and service. Okay, which is in the form of the chapter called Magic Wand, which is chapter number 24. More you use your life for the others, more you're going to get, because it is win-win situation. Okay, so you're giving it to someone, even if it is a blessing, 1,000 blessings are going to come to your life, and you will see that fundamentally वो difference आना शुरू हो जाएगा. So हम वो chapter पढ़ते हैं, and our very popular Soumya madam will be reading for us today. So I will just take it through the image. One sec. So the image here is magic wand, as in there is a coat that we can see here, a shirt or a coat, whatever we could say. The face is what you need to paste here. जिसका भी चेहरा आपके दिमाग में है, मतलब you have to know that person very closely. ये मैंडेटरी पार्ट ऑफ दिस प्रैक्टिस है, मैजिक वॉन्ड, बिकॉज तभी वो फीलिंग्स एंड इमोशंस आएंगी कि वो पर्सन जेन्युइनली बहुत खुश हो जाए, उसकी जिंदगी में खुशियों की बारिश हो जाए, उसका जो भी है हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस वो उसकी जिंदगी में भर भर के आए. इट रेन्स हैप्पीनेस ऑन दैट पर्सन. एंड सो दैट फेस वी हैव टू पेस्ट हियर. ड्रेस नीचे बनी हुई है, इसका मतलब ये इंसान है जिसका चेहरा आपको पता ही है, नाम भी पता होगा, तो इसका मतलब है हमको फोटो रखनी पड़ेगी, क्योंकि चेहरा तो तभी सामने आएगा. और एक जादू की छड़ी है, दिस जादू की छड़ी या मैजिक वॉन्ड बोलते हैं इसको. इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर पर्सन. फेस की तरफ डायरेक्टेड है, मतलब हमको स्पेसिफिक होना है कि कौन से वो इंसान है, और दैट्स अबाउट इट, सो ये हमको. एंड हु इज दैट जादू की छड़ी? वी, ईच ऑफ अस. बिकॉज हम में वो पावर है कि हम किसी की जिंदगी बदल सकते हैं, और अपनी जिंदगी को जितना सर्विस के लिए यूज करेंगे इन इट्स ओन वे, we will see that our life transforms, and that is the best way to see monumental changes in anyone's life. So yeah, day number 24, the magic wand. Yes, Soumya, can you please start reading? Oh, thank you, ma'am. Thank you, everyone. Day 24, the magic wand. Have you ever wished, one second, sorry. Have you ever wished you had a magic wand so that you could just wave your wand and help the people you love? Well, today's magical practice will show you how you can use life's real magic wand to help others. When you fervently want to help other person, you have immense power, but when you direct that power with gratitude, you really do have a magic wand that can help the people you care about. Energy flows where your attention goes. And so, when you direct the energy of gratitude toward another person's needs, that's where the energy goes. This is the very reason why Jesus said thank you before he performed a miracle. Gratitude is an invisible but real force of energy, and coupled with the energy of your desire, it is just like having a magic wand. Quote, people who wait for a magic wand fail to see that they are the magic wand. Unquote. Thomas Leonard, 1955 to 2003, personal development coach. If you have a family member, friend, or anyone you care about who is lacking physical health, in financial trouble, unhappy in their work, stressed,
suffering because a relationship has ended, lost confidence in him or herself, suffering from mental problems, or feeling down about their life, you can use the invisible force of gratitude to help them with their health, wealth, and happiness. To wave your magic wand for another person's health, imagine that the person's health has been fully restored and say the magic words, "Thank you," in heartfelt celebration of receiving the news that he or she is full of health again. You could imagine the person calling you to give you the news, or imagine them telling you in person and really see and feel your reaction. When you can feel as grateful now as you would when you heard the news that the person's health has been fully restored, it will guarantee that the gratitude you feel is as sincere and as powerful as it can be. To wave your magic wand to help someone you love with their wealth, follow the same magical practice and be as grateful as if they had the wealth they needed right now. Imagine their wealth has been fully restored. It is done, and you are saying the magic words, "Thank you," because you have just received the amazing news. If a person you know is going through a tough time, but you don't know what specifically they need, or if they need help in more than one area, then you can follow the same magical practice and wave your magic wand by giving thanks for their happiness, for their health, wealth, and happiness together. Today, choose 3 people you care about who are currently in need of health, wealth, or happiness, or all 3. Get a photograph of each person if you have one, and keep the photographs in front of you while doing this practice. Take the first person, hold their photograph in your hand, then close your eyes and for 1 minute, visualize yourself receiving the news that the person has been fully restored with whatever they need. It is much easier to visualize yourself receiving the news than it is to visualize, for example, an ill person healthy again, or a depressed person happy again, or a financially stressed person abundant again. And you will feel more excitement and gratitude if you involve yourself in your visualization. Open your eyes and with the photograph still in your hand, say the magic words, "Thank you," slowly 3 times for that person's health, wealth, or happiness, or whatever combination they need. For example, thank you, thank you, thank you for the person's name, health, wealth, or happiness. As you finish with one person, move on to the next person and follow the same 2 steps until you have finished the magic wand practice by sending health, wealth, or happiness to all 3 people. You can also use this powerful practice when you're walking down the street or going about your day and you come across someone who is obviously lacking happiness, health, or wealth.
Imagine you have a magic wand and in your mind wave it by giving heartfelt thanks for their wealth, health, and happiness. And you and know that you have set a real force of energy into motion. Using gratitude to help someone else with his or her health, wealth, and happiness is the single greatest act of gratitude you can perform. And one of the magical things about it is that the health, wealth, and happiness you fervently wish for others, you also bring to yourself. Magic practice number 24, the magic wand. First one, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, choose 3 people who you care about and who you would like to help with more health, wealth, happiness, and or all 3. Number 3, if you have them, collect a photograph of each of the 3 people and keep it in front of you while doing the magic wand practice. Number 4, take one person at a time and hold their photograph in your hand. Close your eyes and for 1 minute visualize the person's health, wealth, or happiness has been fully restored and you're receiving the news. Fifth, open your eyes and with the photograph still in your hand, say the magic words slowly. Thank you, thank you, thank you for the name of the person, health, wealth, or happiness. Sixth, as you finish with one person, move on to the next person and follow the same 2 steps until you have finished the magic wand practice for all 3 people. 7. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yeah, thank you so much, Soumya. Thank आराम you so आराम से much. धीरे धीरे पढ़ने के लिए. Thank you. Thank you. So the whole thing in this is that you really, if you fervently is the word which is used, that means आप दिल से अगर किसी की खुशी चाहते हो अपनी जिंदगी में, तो अब आपके पास उतनी पावर है कि आप उनको हेल्प कर सकते हो. जो भी उनके लाइफ की इशू है, चाहे वो बहुत मेजर है, इफ यू रिपीटेडली डू इट, कभी कभी बहुत डीप होते हैं किसी के इश्यूज लाइफ में, लेकिन अगर आप रिपीटेडली वाली प्रैक्टिस उन पे करते हो, आप जिन लोगों को जानते हो उन पे रिपीटेडली अगर करते हो, तो यू विल डेफिनेटली सी अ ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग. मतलब किसी भी. So these 3 words I had told you even earlier, that use this as your catchphrase: health, wealth, happiness. So even if you see a rickshaw wala, it is health, wealth, happiness for that person. If you see any uncle walking, in when you go for your morning walks, if you see that uncle, obviously that person would need your blessings, health, wealth, happiness. और blessings का सबसे बड़ा जादू और सबसे बड़ी reality ये होती है कि जितना ज्यादा आप उसको खर्च करते हो, उतनी ज्यादा वो accumulate होती है, और उसको आपने खर्च किया तो वो बहुत सारा पावर और बहुत सारी क्वांटिटी में आपके पास वापस आती है. तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि सड़क पे भी आप जा रहे हो, कभी कभी स्पेशली जब बहुत परेशान हो रहे हो, उस वक्त अपनी जिंदगी को लोगों को ब्लेस करने के लिए यूज करो, एंड देन यू विल सी दैट आपकी प्रॉब्लम एक मिनिस्क्यूल हो जाएगी एंड इट विल जस्ट डिसिपेट ऑफ फ्रॉम द लाइफ. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसीलिए दैट शिफ्ट इन अ हार्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे हम रियलाइज करें दैट हमारा सिर्फ एक रोल है इस दुनिया में आने का, सर्विस फॉर द अदर पीपल. अगर आप कोई नॉलेज भी कहीं से अटेन कर रहे हो, उस नॉलेज को जब तक आप खर्च नहीं करोगे ना, तब तक वो वैसे भी चली जाएगी.
तो इसीलिए बहुत बड़ी चीज होती है, कहीं से कुछ नया पता लगता है, कहीं से कुछ अलग पता लगता है, या कहीं से आपने कोई नॉलेज गेन की होती है, या मैंने अगर कहीं पे कोई बुक पढ़ी होती है और उसमें मुझे कुछ की टीचिंग्स मालूम पड़ती है कि वाओ, आई विल नॉट थिंक दैट ये मैं अपने लिए यूज करूं। ठीक है, जब तक मैं आपको बताऊंगी नहीं तब तक वो नॉलेज स्टैग्नेट हो जाती है, बिकॉज ये एनर्जी होती है और ये सर्कुलेट होनी जरूरी होती है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो नॉलेज की एनर्जी हो, उसको सर्कुलेशन चाहिए होता है, बिकॉज मूवमेंट इज द ओनली लॉ ऑफ लाइफ, because the sun is moving, the earth is moving all the time, all the 9 planets are moving, molecules all around us right now are constantly moving, food in our body is moving, like there is constant fluctuation of electrons जो ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं हमारे हर एक सेल के अंदर। सेल भी तो एटॉमिक लेवल पे एनर्जी रेडिएट करता है। सो एवरीथिंग, एक चेयर में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी लगातार मतलब मूव कर रहे हैं। सो मूवमेंट बहुत जरूरी होती है इन लाइफ, है ना। सो जब भी मूवमेंट, अगर अगर आपने कोई नॉलेज, कोई किताब पढ़ी और आपको कोई कोर्स किया और आपको बहुत ज्ञान उससे मिला, जब तक आप उसको अपने तरीके से यूज नहीं कर लोगे, पास ऑन नहीं करोगे किसी को, तो वो सर्कुलेशन का चेन खत्म हो जाता है, एंड दैट नॉलेज विल स्टैग्नेट एंड इट विल बिकम ड्राई एंड इट विल डाई, एंड दैट्स वेरी वेरी क्लियर। So using your life for the service of others becomes very important. So हम सबसे की टीचिंग्स इन किताबों से हमें ये मिलती है कि अपनी प्रॉब्लम से कंज्यूम्ड हम ना रहें और अपने तरीके से किसी और की लाइफ को अफेक्ट करें, जैसे आप सब ने तो किया ही। आई मीन ऑल ऑफ अस वी स्टार्टेड विद जस्ट 4 people, सो आई वाज लिटरली, जैसे अभी क्लासेस चल रही है वैसे ही मैं 3 लोगों के लिए लेती थी, एक अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए और दीपक के लिए एंड सुनीता प्रधान के लिए। तो ऐसे ही क्लासेस चल रही थी, बट 3 ही पार्टिसिपेंट्स होते थे उसमें। सो इस तरह कर करके सबने एक दूसरे को, तो उन 3 लोगों ने और किसी को बताया, और ज्यादा किसी को बताया, 4 लोगों ने, राधा हम चारों ने, और अपने अपने लोगों को बताया, जहां से भी हमको लगता था कि दिस पर्सन रियली नीड्स टू काइंड ऑफ प्रॉस्पर, ग्रो, थ्राइव, फ्लरिश इन लाइफ, एंड वी वुड टेल अबाउट आर स्टडी, दैट हम ये स्टडी करते हैं सुबह, वुड यू लाइक टू ज्वाइन। इस तरह कर करके देखो अभी 900 की फैमिली हो गई है, और यूट्यूब पे इतने सारे लोग हैं जो सिर्फ यूट्यूब पे सुनते हैं, है ना। कल भी मैं जब आप लोगों से मिली तो सब वो था कि सुबह अगर नहीं करते हैं या सुबह जाना होता है, बट यूट्यूब पे सब कंसिस्टेंट है। So this is how life grows. So all that is constantly moving and it's growing and flourishing and thriving, because growth, flourishment and thriving is the only constant in our life, and that has to continue. So using our life now to serve others in our own little way, like in our own unique way, because सबका अलग अलग तरह का काम है, कोई बैंक में काम करता है, लेकिन कोई नेबर से जब दिल वैसा हो जाता है ना, जब आपको लगता है कि I touch and I impact other person's life, so how have you made a dent in other person's life is what you're going to leave this world with. How many people have you done, what has been your conduct with them, these are the only things that matter. आप अपने लिए क्या कर रहे हो, कौन से कॉस्मेटिक्स आपने खरीदे, क्या नहीं, क्या वो नहीं, it all doesn't matter. At the end of the day, how many lives have you touched? This is the biggest karma that we are carrying from this lifetime to the next and next and next. So hence, using your life to just bring that smile on someone's face, caring for someone, or praying for someone. You don't even have to meet. Like, I am not a social person. You will not see me attending parties and weddings and this and that. No, I mean, I will go, I'll make my presence well, give the gift, come back. I don't invest my energy in doing anything to please someone, never been a people's pleaser. I was at one point of time in the beginning of my career, but then yeah, I mean, like, you learn with time and you just go forward, right? So now is the time when all of us have come to that level where we have to start using our life in a very big way. ये प्रैक्टिस तो फर्स्ट टाइम रीडर्स के लिए ठीक है कि 3 लोगों को करनी है, बट 3 लोगों से तो अब हमारा कुछ होगा नहीं। हमको नोन पीपल, अननोन पीपल, पीपल जो हमारे साथ हैव नॉट बीन वेरी नाइस, लाइक जो जिनका भी जो भी who have not been good to us, who have given us that moment of worry, concern, or a fear, or anxiety, or anger, or whatever. ठीक है, स्पेशली उन लोगों के लिए मैजिक वॉन्ड प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बिकॉज कहीं से भी आपको अगर किसी भी तरीके से ऐसा बिहेवियर मिलता है जो एक्सेप्टेबल नहीं होता है जेनरिक टर्म्स में, इसका मतलब है कि उस इंसान की जिंदगी में सफरिंग है।
उसके पास वही है आपको देने के लिए, तो वही तो देगा। जिसके पास जो होता है, आपके पास ब्लेसिंग है देने के लिए, आपकी जिंदगी में कूट कूट के भरी हुई है, तो आप ब्लेसिंग्स दोगे, आप प्यार दोगे लोगों को, और आप यू विल बी एट सर्विस टू अदर्स। वेरएस अगर किसी के लाइफ में बहुत सफरिंग है, तो वो आपको सिर्फ सफरिंग ही तो देगा, है ना, वो देगा, उसके पास वही है ना। अब उस पर्सन को नहीं पता ना, उसकी लाइफ ग्रो एंड एक्सपैंड नहीं हुई है, लेकिन आप उसकी जिंदगी में किसी रीजन से आए हो। ठीक है, सो हम किसी से भी मिलते हैं, कहते हैं ना, यू डोंट मीट एनी पर्सन विदाउट अ रीजन, एंड देयर इज ऑलवेज अ हायर रीजन फॉर इट। इट इज नॉट जस्ट कि ठीक है ऐसे, देयर इज अ हायर पर्पस, हायर रीजन फॉर इट। सो अगर हम भी कल मिले हैं तो उसका रीजन है। अगर इफ आई हैड टेकन सौम्या आउट फॉर अ डिनर ट्रीट समडे, इट वाज फॉर अ रीजन। ओके, समथिंग इन द लाइफ शिफ्ट्स फंडामेंटली, विच एवर वे। इट इज नॉट दैट मेरी वजह से उनकी लाइफ, उनकी वजह से भी मेरी लाइफ में शिफ्ट आता है। सो बहुत जरूरी होता है कि हम ये मैजिक वॉन्ड प्रैक्टिस या ब्लेसिंग्स इसको आप बोल सकते हैं, इसको हम बहुत सीरियसली लें, है ना। सो 1 second, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, सो दिस इज व्हाट टुडेज प्रैक्टिस इज ऑल अबाउट, दैट यू नो वी हैव स्केल्ड द 23 चैप्टर्स, और 23rd चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि जब आप नेचर के लिए दिल से थैंकफुल हो जाते हो, है ना, जब नेचर के लिए दिल से थैंकफुल हो जाते हो, फूल पत्ती पेड़ पौधे हवा बारिश क्लाउड्स, क्लाउड्स की शेप्स को एडमायर करते हो, ब्यूटीफुल सनराइज को सेलिब्रेट करते हो, सनसेट को सेलिब्रेट करते हो, ओशंस को सेलिब्रेट करते हो, so apne aap we reach that level where you are aligned with the universe already, and the powers of that nature, they infiltrate into our lives, and now we are using our life to bless others, and that is the best way to actually, you know, like improve your life in the grandest way possible ever. अगर जिंदगी भर भी हम अपने लिए 1100 टाइम्स भी अगर लिखेंगे ना, that my income is constantly increasing, my income is constantly increasing, my income is constantly increasing, तब भी उतनी जल्दी वो प्रेयर आंसर नहीं होगी कि आपने किसी और के लिए ये बोला है कि उसका बिजनेस खूब थ्राइव करे, उसका बिजनेस, जो भी आपकी लाइफ में पीपल हैं, कि वो खूब फ्लरिश करें, खूब ग्रो करें, उनके पास पैसे की बारिश हो, एंड दे इंजॉय द लग्जरीज ऑफ लाइफ, खूब अच्छी हेल्थ इंजॉय करें, जो उनके मन में डिजायर्स हैं, जितने बड़े बड़े घर महल खड़े करने हैं, वो उतनी फ्रीडम हो उनको, फाइनेंशियल फ्रीडम, कि वो सब कर पाए। फिर आप देखना कि आपको 1100 बार रोज लिखना ही नहीं पड़ेगा, इट विल जस्ट हैपन आउटराइटली, कुछ मतलब बिना मेहनत के। लेकिन मेहनत ये करनी है कि लोगों के लिए हम करें। तो आज की प्रैक्टिस ये पूरा चैप्टर जो हमने पढ़ा है वो तो हमने पढ़ ही दिया है, सौम्या बहुत आराम आराम से पढ़ ली थी, लेकिन इस चैप्टर का क्रक्स यही है कि गोइंग फॉरवर्ड, entering into the New Year's tonight at 12 o'clock midnight, when Earth would have completed one entire circle round the sun. This is the significance. Okay, so हम जो भी 10 और 100 इन सबको नंबर ऑफ न्यू बिगनिंग्स बोलते हैं, असली न्यू बिगनिंग तो 12 बजे शुरू होगी, है ना, जो कल का दिन होगा, कल पहला दिन होगा जो बहुत सिग्निफिकेंट होगा, जिसमें अर्थ अपना फ्रेश सर्कल एक फ्रेश एनर्जी के साथ शुरू करेगी अराउंड द सन, है ना। 365.5 डेज में एक सर्कल होता है, अर्थ पूरा एक चक्कर काट लेती है सन के अराउंड। ये सिग्निफिकेंस होता है न्यू ईयर का। ठीक है, सो अब वो आज रात को 12 बजे वो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, वापस घूम के अर्थ उसी पॉइंट पे आ जाएगी और अपना नेक्स्ट सर्कल शुरू करेगी। नेक्स्ट सर्कल जब शुरू करते हैं तो वी नो दैट प्लैनेटरी पोजिशंस एंड प्लैनेटरी सर्कल्स, सन मून अर्थ, एवरीथिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना। मैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं, उस हिसाब से हम जो बोलते हैं, बचपन से तो ये करते आ रहे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, बट अलाइनिंग विद दैट फ्रेशनेस, दैट किक स्टार्ट दैट वी हैव टू गिव टू आवर लाइव्स, with a broader vision, with more compassion, more love, and more service to the others, is how we need to move forward. So that little shift in our heart where we are just talking about ourselves, thinking about my money, my relationships, my this, my that,
is now shifting to resolving others people problems or whatever issues and challenges they have in their life, and really feeling and visualizing that उनकी वो issue, जैसे कोई घर खरीदने की कोशिश कर रहा है, बहुत टाइम से नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, ठीक है, बट 1 मिनट के लिए विजुलाइज आप कर लो दैट वो पर्सन, जो भी आपका हो सकता है, वो आपका पड़ोसी है और वो बहुत रेंट दे रहा है और उनको बहुत टाइम से है कि नहीं हमारे अपना घर हमें खरीदना है, तो वो अब आप विजुलाइज कर लो कि उस पर्सन वो आपको ये न्यूज दे रहा है, क्योंकि आवाज आपको उनकी पता ही होगी क्योंकि वो आपका नेबर है ना, या फ्रेंड्स है। तो अब उन्होंने आपको कहा कि यू नो दैट आई हैव बीन एबल टू बाय दिस हाउस, इतना सुंदर घर मिल गया बिल्कुल बजट में, बैंक का लोन बहुत आराम से अप्रूव हो गया और इतना कम लोन है, पता नहीं कैसे कहाँ से पैसे का भी अरेंजमेंट हो गया, और बस अभी 1-2 महीने हम उस घर का रेनोवेशन करा रहे हैं और उसके बाद हम मूव इन कर जाएंगे वहां पे, और वो पूरी डिटेल्स दे आर टेलिंग यू कि कितने रूम का घर है, कैसी बैल्कनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। सो इस तरह से जब हम विजुलाइज करके फिर हम उसको सील कर देंगे, जो आपने विजुलाइजेशन किया, उनकी आवाज सुनी, आपने इमेजेस देखी, अब उसको सील करना है, कैप करना है 3 बार थैंक यू बोल के, ठीक है। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर दैट पर्सन्स हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, ठीक है। तो अब ये चीजें उसकी जिंदगी में आ जाएंगी और तीनों ही आ जाएंगी। उसको सिर्फ हैप्पीनेस चाहिए थी घर खरीद के, लेकिन आपने हेल्थ और वेल्थ भी उसको बोनस दे दिया ब्लेसिंग्स का, तो वो बोनस जब दिया है ब्लेसिंग्स का, तो बोनस ब्लेसिंग्स आएंगी भी तो वापस। लास्ट लाइन में, लास्ट पैराग्राफ में यही लिखा है। लेकिन इसलिए मत करना, देखो हार्ट इंपॉर्टेंट होता है और इंटेंशन जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने इस इंटेंशन से किया है कि मेरी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आ जाएं, इसलिए मैं ये प्रैक्टिस सबके लिए करती हूं, तो वो इंटेंशन भी यूनिवर्स और हमारे बीच में कोई नहीं होता, ठीक है। सो वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है। सो जब इंटेंशन ये वाला होगा, ग्रीड का, सेल्फिशनेस का, तो फिर कैसे प्रेज आंसर होंगी। दिल से चाहो, है ना, वी हैव टू रीच दैट लेवल, जब हम दिल से चाहें कि उस पर्सन की जिंदगी में खुशियों की बारिश हो जाए और सारी वो चीजें जो उसको चाहिए थी वो उसको मिल जाए, ठीक है। नॉट इसलिए कि मेरी जिंदगी अच्छी हो जाए ना तो मैं आज 10 लोगों को ब्लेस कर देती हूँ, ठीक है, ये भी हो जाता है कभी कभी। तो थोड़ा सा कहीं पे सेल्फलेस होने की जरूरत होती है, एंड देन यू विल सी दैट योर लाइफ इंट्रिंसिकली स्टार्ट ग्रोइंग। एंड इट्स ओके अगर शुरू शुरू में आपको वो वाली फीलिंग नहीं आ रही है दिल से, आपको ये लग रहा है कि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है और मैं किसी और के लिए कर रही हूँ और ये सारी चीजें, तो कोई बात नहीं, ठीक है। इमोशंस आर टू बी फेल्ट, वी डोंट हैव टू बीट आवरसेल्व्स अप, सब कुछ धीरे धीरे हो जाता है। वी विल ऑल रीच दैट लेवल जहाँ पे हम बहुत अच्छे से किसी को ब्लेस कर पाए, चाहे हमारी लाइफ में कुछ भी उस वक्त चल रहा हो, ठीक है। तो वो हो जाएगा धीरे धीरे। दिस इज अ प्रोसेस, लाइफ इज नेवर एन एंड गेम, इट इज ऑलवेज अ प्रोसेस, and that process makes us grow and develop. So it's absolutely okay if you're getting that emotion of why और दिल से नहीं निकल रहा है, कोई बात नहीं, आप कर लो। जैसे रौनक बहन बता रही हैं, जैसे अभी मैं समझाऊंगी वैसे ही कर लो, डजेंट मैटर कि आपका दिल से किसी के लिए नहीं निकल रहा है, कम से कम आपने सोचा तो किसी और के बारे में, ये भी एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट, बहुत बड़ी ग्रोथ होती है, ठीक है। सो ग्रोथ के अपने सबके मायने अलग अलग होते हैं, डायनेमिक्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। सो ग्रोथ का डायनेमिक ये भी होता है किसी का दैट यू नो दैट आप कितनी जल्दी सो पा रहे हो, आप अपनी लाइफ को कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हो, जैसे मैंने अपनी ऑर्गेनाइज कर लिया अब अपनी लाइफ, कुछ भी हो जाए, आई एम इन बेड बाय 9 PM, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट काम है, चाहे मुझे कितनी भी इंपॉर्टेंट बुक पढ़नी हो, चाहे कितना भी अंदर से आ रहा है ये किताब पढ़ो, आई हैव ऑर्गेनाइज माई 9 to 4 साइकिल, 9 to 4 भी नहीं, आई थिंक 3:35 or something, I'm up and about. Okay, so I have been able to organize myself अपने आप से। तो इसके कारण बहुत सारी चीजें चेंज होती है, मतलब घर में सब जल्दी खाना खा लेते हैं, यू नो, पूरे सिस्टम बहुत ऑर्गेनाइज वे में चलता है। एवरीबडी गिव्स टाइम टू देयर वर्कआउट्स इन द मॉर्निंग, और बहुत अच्छा लगता है सुबह 4 बजे से 6 बजे तक जो लिखते हैं। जैसे आज से मैंने एक किसी स्पेसिफिक इशू के लिए 555 टेक्निक शुरू की है, तो वो 55 टाइम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करने के मायने ही अलग होते हैं। So it works in a very different way when I do it later or when I do it in the morning. Because सुबह जब लिख रही हूँ तो कोई नहीं, पूरे फोकस और कॉन्सेंट्रेट, मेरे 17 सेकेंड्स इतने मल्टीपल। तो इस तरह से सक्सेस के सबके मायने अलग अलग होते हैं, डायनेमिक्स अलग होते हैं।
हो सकता है किसी का है कि बिल्कुल बुक रीडिंग का आदत नहीं है, and that person has at least made an attempt to buy a book and read one chapter of it. That's growth, isn't it? कभी कभी होता है बिजनेस में that आप बहुत रिटॉर्ट करते हो, कोई भी जैसे लेट आता है और अब आपको समझ में आ रहा है कि इसको बैठा के अलग से रूम में समझा दो, अच्छे से बात कर लो that this is how it is and everybody needs to have a discipline in life and please come on time and all that. तो अब आपने वो किया, वो ग्रोथ हुई ना। तो इस तरह से डायनेमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड सक्सेस सबके अलग अलग होते हैं। बिहेवियर में सक्सेस हो रहा है, मन में जो कभी फियर्स आते हैं लेकिन अभी आप बहुत जल्दी ओवरकम कर पाते हो फियर को, वो एक सक्सेस है। पहले कभी भी कुछ हो जाता था तो आप ड्वेल करते रहते थे 1 दिन 2 दिन 3 दिन मिजरी में। अब ये होता है कि मैक्सिमम आधा घंटा लगता है, बिकॉज अब आपको टूल पता है कि कैसे अपने आप को ऊपर उठा के लेके आना है वापस, और आपको ये पता लग गया है कि मुझे उस सिचुएशन में या उस काइंड ऑफ जोन में नहीं रहना है। इट्स अ वेरी लो फ्रीक्वेंसी। अब ये पता लग गया है कि मुझे फ्रीक्वेंसी अपनी हाई करनी है। सो ये है। फिर आप जब पैसे देते हो तो पहले कभी गुस्सा आता था, अब आप पैसे देते हो तो खूब ब्लेसिंग पैसे में डाल के देते हो कि जिसकी भी पॉकेट में वॉलेट में ये वाले पैसे जाएंगे उसकी जिंदगी में खूब बरकत आए, और दिस मनी बिकम्स द स्टार्ट ऑफ दिस पर्सन्स प्रोस्पेरिटी, even if it is the parking guy you have given the money to, or anyone for that matter at a traffic signal here, like there are people who want money or whatever. So अगर उनको भी दिया है that ये पैसा बहुत अच्छी चीज के लिए यूज हो, for everything which brings happiness to this person and which is good for his health and being. So that way इस तरह कर करके, तो अब वो सारी चीजें, वो एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, क्योंकि पहले जिंदगी भर तो हम ऐसा नहीं करते आ रहे हैं ना, अब हम कॉन्शियसली कर रहे हैं, लेकिन अभी भी भूल जाते हैं कभी कभी। तो इसीलिए तो मैजिक बुक प्रैक्टिस लगातार कर रहे हैं, ताकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न पूरी तरह से पॉलिश हो जाए, है ना। और सारी चीजें, बिकॉज लाइफ में कुछ कुछ ऐसे मोमेंट्स होते रहते हैं वेयर we do, like suppose if your domestic helper is done 15 छुट्टीज और 10 छुट्टीज and when you're giving the salary, तो अपने आप मन में आएगा ना कि पूरे महीने के मैं इसको पैसे दे रही हूँ लेकिन ये 10 दिन नहीं आई थी। तो पहले आराम से बैठ के बात करो, ठीक है। सबको प्यार की भाषा बहुत आराम से समझ में आती है, गुस्से की भाषा किसी को समझ में नहीं आती है, और वो एनर्जी वापस हमारी लाइफ में आती है। तो प्यार से पहले समझा दो, ये कर दो, लेकिन जिस दिन पैसे दे रहे हो उस दिन फ्रीक्वेंसी अपनी हाई रहनी चाहिए और उस पैसे में ब्लेसिंग होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें भी टेक्निक्स, लाइक प्रैक्टिसेस आर नॉट, बिकॉज हम तो लाइफ लॉन्ग ही मैजिक बुक पढ़ने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि हम कभी भी उस पॉइंट पे पहुंच पाएंगे जहां हमें लगेगा कि ओ आई एम 100% डन, अब मुझे सब आ गया, बिकम गॉड। वो तो पोजीशन आएगी नहीं ना, हमारी आनी भी नहीं चाहिए, है ना। इसका मतलब है आपकी ग्रोथ रुक गई है। और स्टैग्नेशन इज अ वर्ड दैट आई जस्ट अबोर, like we don't have to stagnate. There's a constant progression that has to happen in everybody's life. There's a constant learn. Every time from the chapter have your takeaway line or a takeaway lesson. So of course सौम्या तो देती ही है अपनी तरफ से, ठीक है, लेकिन हमारा भी तो होना चाहिए कि okay, my today's takeaway is this and I will try to implement this in my life. Okay, so sometimes you will fall, which is okay. I mean, life is not in black and white. There are gray areas in all of our lives, which is okay. And that is what propels us to push ourselves more into doing something that we could not do today. है ना। अगर फिर से हम 6 बजे नहीं उठ पाए हैं, हम 6:10 पे उठे हैं, फिर हम डिटरमिन करेंगे नहीं नहीं मुझे रात में टाइम पे सोना चाहिए, ये नहीं कि मैं सुबह जल्दी उठूं। मतलब मैं इतनी फ्रेश हूँ, इतना सारा, आई थिंक आई मस्ट हैव डन मोर देन 200 ब्लेसिंग्स, आई हैव मेड माय चाय, आई हैव हैड दैट, देन आई हैव रेड माय बुक, आई हैव डन माय मेडिटेशन, और मैं इधर उधर घूम भी रही थी, अपनी एक्सरसाइज कर रही थी, सब कुछ करके देन आई केम इन फ्रंट ऑफ यू। इट वाज नॉट अ रश रश रश, सो आई हैव बीन एबल टू वर्क ऑन दैट टाइम। नो, सो वी कैन ऑल वर्क ऑन आवर टाइम्स। सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, सबको सब कुछ उसी 24 घंटे में करना होता है। नोबडी हैज द 25th hour, बट for years now, even before I was into this book, I would actually pray that, universe, God, please make my 24 hours as 48 hours. I want to do all the things of 48 hours, into the 24 hours. I want to do so much because I've always had that in me, that I wanted to, like I've never led an aimless life कि मुझे शुरू से पता था कि मेरा मीनिंग ये है, मेरा पर्पस ये है। सो उस तरह से अब मैं 48 आवर्स का काम 24 घंटे में करती हूँ, और बहुत ईजी रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो अपने उठने पे वर्क मत करो, अपने सोने पे वर्क करो। अगर सोने पे वर्क करोगे तो उठने पे वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स, सो streamlining life in our own way and growing and then doing these practices will make us lead our dream life and bring all those things into our life.
You know, this is how life operates. It is not just about doing the practice. So now we have reached that level where we can come to this understanding that it is not just about doing the practices. It is about what we are doing. See, 1 hour, 1.5 hour, we are together, all of us. This also becomes a thrust that takes us forward in life, because इसमें हम सिर्फ वो बातें कर रहे हैं, growth, progress, love, success, victory, compassion, service, happiness, joy, laughter, etc. etc. है ना, जो बहुत है हमारी जिंदगी को आगे ले जाने के लिए। इतनी देर के लिए, मतलब few seconds में फर्क पड़ता है, तो हम तो बहुत देर तक सिर्फ यही बातें करते हैं। उसके बाद अगले 23 घंटे में जो 23 आवर्स हैं, उसमें क्या कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप हर इंसान के लिए बहुत जरूरी होती है, बिकॉज स्लीप के टाइम ही हमारी बॉडी रीस्टोर करती है, मतलब मैन्युफैक्चर करती है अलग अलग हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, एंजाइम्स बन रहे हैं, इम्यून सेल्स बन रहे हैं, बाल ग्रो हो रहे हैं, मेन की बियर्ड्स बढ़ती है। वो 20 आवर्स तक अवेक है तब उनकी बियर्ड नहीं बढ़ती है, 4 घंटे के लिए सोते हैं उसमें बढ़ जाती है। आप सोच सकते हो कितनी ग्रोथ अच्छे से होती है ना रात को। सो जब स्लीप टाइम में, तो वो भी बहुत जरूरी है, उस पर कॉम्प्रोमाइज मत करो। दिस इज व्हाट, बिकॉज वी आर इनटू दैट लास्ट फेज ऑफ दिस ईयर, सो आई वांट टू टेल दैट स्टार्ट योर न्यू ईयर विद सम काइंड ऑफ अ डिसिप्लिन इनटू आवर ओन लाइफ एंड सेटिंग द फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे ना, तो फिर आगे की जिंदगी, मतलब प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया, नींव बहुत सॉलिड होनी चाहिए, उसके ऊपर तो बिल्डिंग आप बिल्ड करते रहो, पैसे की, लव की, कंपैशन की, रिलेशनशिप की, हेल्थ की, वो सब ठीक है। ठीक है, तो अभी भी हो सकता है कि हमारी फंडामेंटल शेकी हो, थोड़ा सा हमारी नींव हो सकता है अभी भी शेकी हो, लेकिन हम उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस जिस एरियाज में जो हमारी शॉर्ट कमिंग है, उसमें वर्क करते हैं। हम सबको पता है कि दिस इज व्हाट आई कैन इम्प्रूव इन माई लाइफ, दिस इज वन एरिया दैट आई कैन इम्प्रूव इन माई लाइफ। ठीक है, आई ऑल्सो नो दैट विच इज दैट वन एरिया आई रियली नीड टू इम्प्रूव इन माई लाइफ, आई नो वेरी वेरी clearly. So I'm also working on that right now. So just recognizing and then working on it is important. And then comes the practices also. Practices are also, okay, because they are building up our lives. So about today's practice now, magic wand, Jadoo ki chhadi. Jadoo ki chhadi is each of us who's doing this practice. We are using the energy of blessing, love, and compassion for someone else's service. ओके तो हमारी पहली बात इस प्रैक्टिस की ये प्री रिक्विजिट है कि आप उस पर्सन को अच्छे से जानते होने चाहिए। यू शुड बी नोइंग दैट पर्सन क्लोजली, जिसके लिए आप कर रहे हो। वी हैव टू चूज 3 पीपल इन आवर लाइफ, जिनके लाइफ में कुछ इशू चल रहा है। हो सकता है हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रहा हो सकता है उनसे उनके लॉस के साथ में गड़बड़ है जिसकी वजह से वो बहुत लो रहती है। हो सकता है कि उनका कोई कोर्ट केस चल रहा हो सकता है दैट उनका बिजनेस में थोड़ा सा ब्रेकडाउन चल रहा है, हो सकता है उनके हेल्थ में ब्रेकडाउन चल रहा है। ठीक है, हो सकता है वो जॉब ढूंढ रहे हो लेकिन उनकी नहीं लग रही है, या पिछली जॉब चली गई और एक और चाहिए। सो इट कुड बी एनीथिंग। ओके, सो उन 3 लोगों की तो पहले लिस्ट बनाओ, रिटन लिस्ट होनी चाहिए, रिटन लिस्ट बनानी है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 3 लोगों का नाम लिखो, तीनों की फोटो लो, क्योंकि इसमें फोटो से बहुत स्ट्रेंथ, मतलब द प्रैक्टिस गेट स्ट्रेंथन व्हेन यू हैव द पिक्चर ऑफ दोस पीपल। तो उनकी फोटो डिजिटली व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम से, कहीं से भी आप ले सकते हो। सो पहले पर्सन की फोटो लो। अब ये अगेन ये प्रैक्टिस ऐसे टाइम पे करना जब थोड़ा दिमाग शांत है और आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें रिटन के साथ साथ विजुअलाइजेशन भी है। ठीक है, सो ये कर लिया, और फिर अब उस पर्सन को, तो मैं लिखने को नाम इसलिए बोल रही हूँ कि कई बार प्रैक्टिस करते करते भूल जाते हैं कि तीसरा इंसान कौन था, क्योंकि इतने सारे लोगों को हम जानते हैं ना, तो लिख के सामने रखना उसको। बिकॉज ये शुरू शुरू में मेरे साथ भी होता था, मैंने सोचा ये 3, बट मेरे दिमाग में ना 5 नाम आते थे कि अच्छा हाँ ये भी तो है, इनका भी तो कर सकती हूँ, इनका भी तो कर सकती हूँ, लेकिन प्रैक्टिस के हिसाब से हमें 3 ही लोगों का लेना है। तो उन 3 लोगों का पहले नाम लिख लो, अपने सामने रखो उनका नाम लिख के, ताकि जो चौथा पर्सन भी आपने सोचा था उनके लिए कर लेना आप कल दोबारा। क्योंकि अगर अर्णव ने बोला है 3, इसका मतलब नंबर के हमेशा मायने होते हैं, दिस ऑलवेज अ बिगर रीजन फॉर द नंबर। सो विल पिक अप द फर्स्ट पर्सन, उनका अब हमको अच्छे से फोटो देख के थैंक यू अच्छे से मन में, गेट इनटू दैट अल्फा स्टेट, थोड़ा ब्रीदिंग कर लो, वो कर लो, ताकि
यू कॉन्जर दैट एनर्जी, और दिमाग में जो चल रहा है कि आज मैं बहुत थक गई, आज ये सब नहीं होना चाहिए उस वक्त। सो इसीलिए आराम से ब्रीथ करो, बैठो, पीठ सीधी करो, शोल्डर स्ट्रेट रखो, थोड़ा सा चिन अप करो। अब विजुलाइज करो कि उनका जो भी इशू था, ठीक है, फोटो अच्छे से देख ली, अब फोटो कैप्चर हो गई ना हमारे दिमाग में। अब उनका विजुलाइज करो कि जो भी इशू चल रहा है, जैसे अगर जॉब उनको ढूंढ रहे थे, जॉब शिफ्ट करने की सोच रहे थे या ढूंढ रहे थे क्योंकि बहुत लॉन्ग आवर्स थे, या उनका ट्रांसफर नहीं हो रहा था किसी और सिटी में, अब आप उनको बहुत अच्छे से विजुलाइज करो कि उनका ट्रांसफर हो गया है, वो इस सिटी में आ गए हैं, और कितनी खुशी से आपको फोन करके बता रहे हैं। तो आपको अपने आप को इन्वॉल्व करना इसमें जरूरी होता है, तभी हमने बोला था कि 3 क्लोज लोग होने चाहिए। सो वो आपको बता रहे हैं कि मेरा ट्रांसफर लेटर आ गया एंड फाइनली, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंड इट इज सो ब्यूटीफुल टू बी बैक यहाँ पे, अब मेरे ये गोल्स है। फिर आपने उनसे पूछा कि अच्छा अब आपका नेक्स्ट मूव क्या है, क्या करना चाहते हो, तो बोल रहे हैं हाँ अभी बहुत टाइम से वो घर का काम पेंडिंग रखा हुआ है, घर की थोड़ी रेनोवेशन भी करानी है, तो अब यहाँ पे आ गए तो ये भी है, अब मेरा इतना पैसा भी सेव हो रहा है जो मैं वहां पे रेंट के लिए दे रहा था। और इस तरह से जो भी कॉन्वर्जेशन हुई, और वो पर्सन आपको बोल रहा है कि नहीं आई एम सो हैप्पी कि फाइनली ये हो गया, तो चलो ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। अब ये कॉन्वर्जेशन आपने विजुअलाइजेशन में करी, इमेजिनेशन में। उसके बाद, और आंख बंद करके, विजुअलाइजेशन हमेशा आंख बंद करके होती है, बिकॉज फीलिंग्स तभी फ्यूल होती है जब आंख बंद होती है। उसके बाद जब मिनिमम 1 मिनट के लिए पूरा विजुलाइज कर लिया, उसके बाद आंख खोल के आपको बोलना है आउट लाउड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस पर्सन्स हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड पर्सन का नाम देखो कौन सा वाला है, उसकी फोटो उठाओ, अच्छे से फोटो को देख के बहुत प्यार दो, लव एंड कंपैशन। एंड नाउ अगेन उसकी उनकी जो हेल्थ की इशू चल रहा था, तो अब वो बता रहे हैं आपको कि नहीं अब मेरा शुगर और मेरा ब्लड प्रेशर दोनों बिल्कुल कंट्रोल में है। अभी भी आई हैड गॉन टू द डॉक्टर, मैंने बहुत अच्छे से अपनी लाइफस्टाइल को अब मैनेज करना शुरू कर दिया है, रोज सुबह मैं वॉक करने जाती हूँ, एंड एवरी डे लाइक मैं आई एम माइंडफुल अबाउट ईटिंग। शुगर तो पहले मैं इतना खाती थी, अब मेरी आधी हो गई है बिल्कुल, और मैं बहुत अच्छे से वॉक इतने अच्छे से करती हूँ, उसके बाद मुझे लगता है एनर्जी भी बहुत अच्छी लग रही है आजकल। सो मज़ा आता है, टाइम से सो जाती हूँ, टाइम से उठ जाती हूँ, तो बस आई एम जस्ट एंजॉइंग। और रिपोर्ट्स भी अभी मैंने परसों दोबारा टेस्ट कराया, उसमें आया कि बिल्कुल नॉर्मल है। डॉक्टर ने मेरा बीपी चेक किया तो बिल्कुल 120/80 था, बहुत अच्छा, मतलब सब हो गया। तो चलो बहुत अच्छा है, आपसे मैं अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखूंगी, मुझे तो एक सबक मिल गया है, एंड गोइंग फॉरवर्ड आई विल लुक आफ्टर माई हेल्थ। ठीक है, अभी आपने विजुलाइज कर लिया, अब दोबारा आंख बंद करके, अब आंख खोल के, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, जो भी आप उनको बोलते हो, फॉर दिस पर्सन्स हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। अब तीसरे पर्सन का उठाना है हमें। ठीक है, फिर नाम देखना कौन सा वाला इंसान है, फिर उनका विजुअलाइजेशन आंख बंद करके मिनिमम 1 मिनट के लिए, फिर आंख खोल के, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस पर्सन्स हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। सो ये कर लिया 3 एक्सपेक्टेड जो लोग हैं आपके, आपको पता है कि मुझे इनका करना है ना, तो उनका नाम ही आप लेके बैठे हुए थे। लेकिन ये प्रैक्टिस आप सड़क पे चलते हुए, रेस्टोरेंट में बैठे हुए, मेट्रो में बैठे हुए, बस में ट्रैवल करते हुए, फ्लाइट में ट्रैवल करते हुए, एयरपोर्ट टर्मिनल्स पे बैठे हुए, किसी के ऊपर भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि कुछ, जैसे पता लग जाता है ना, ऐसे कहते हैं ना, योर आईज एंड फेस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर इमोशंस। सो पता लग जाता है किसी को देख के कि दिस पर्सन इज नॉट लुकिंग हैप्पी, है ना, तो उनके ऊपर आप खूब सारा, कि इस पर्सन की लाइफ, शक्ल तो आपके सामने है ही उसकी, है ना, जानते नहीं हो बस। सो दिस पर्सन्स हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, खूब सारी ब्लेसिंग्स, खूब सारी ब्लेसिंग्स करो। सो दिस इज हाउ वी हैव टू। जब हम स्टोर्स में जाते हैं, सामान खरीदते हैं, दोज पीपल हेल्प अस विद पिकिंग अप द सामान, ये हमको बताते हैं कि उसकी शेल्फ वहां पर है, या आपको अगर टोमेटो केचप चाहिए तो वो वहां रखा हुआ है। वो जो बच्चे, छोटे छोटे लड़कियां लड़के होते हैं वहां पे, उनको भी खूब सारी ब्लेसिंग्स ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, शक्ल तो उनके साथ उनकी होती है हमारे सामने। So this is the practice, magic wand. So we are the magic wand, and this energy of like that goes into that other person's life itself will bring you joy and happiness. वो तो बाय प्रोडक्ट है ही, आपको ये नहीं सोचने की जरूरत है कि मैं उसका इसलिए कर देती हूँ ताकि मेरी जिंदगी अच्छी हो जाए। एज अ बाय प्रोडक्ट ये तो होगा ही होगा, ये तो लॉ है नेचर का, दैट जो एनर्जी आपके लाइफ से निकलती है वो वापस आपकी लाइफ में मल्टीप्लाई होके आती है, because everything is circulating and moving all the time. So it will not remain stagnated.
For every cause there is an effect. Okay, for every cause, whether it is done in thoughts, words, or actions, it will give an effect. That's a byproduct that will happen, and this is how we need to move forward in life. ठीक है, बस यही प्रैक्टिस है. सुबह सुबह काउंट माय ब्लेसिंग्स, वो आप प्लीज करते रहिए. एंड ऑफ कोर्स रात को मैजिक रॉक प्रैक्टिस, जिसमें आप पूरे पूरे दिन भर में अच्छे से स्क्रैच beneath the surface and see what all things that had happened and which was the best thing, और थैंक यू बोलो. और अपने मन में आपको जो भी बोलना हो, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, अबंडेंस, सक्सेस, सक्सेस एंड वेल्थ, ये वर्ड्स के सीड बो के आप सो जाओ. ठीक है, सो दैट यू वेक अप इन दैट जोन ऑफ हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, जॉय, laughter, love, success. Okay, these are the keywords that we have to infiltrate into our lives. So when we are sleeping like that, waking up like that, then automatically it will start working that way. So yeah, I mean, like, and today, of course, like, make your own New Year resolutions or whatever. We already have a dream list. अगर आपको उसमें कुछ रिविजन करना है तो कर सकते हो. तो वो तो खैर ड्रीम लिस्ट है, विश लिस्ट है. ठीक है, उसके अलावा अपनी जिंदगी में आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं, ये आप लिखना, ये भी लिख लेना. ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट 10 विश लिस्ट जो हमारी है, या ड्रीम लिस्ट है, या जो भी डिजायर लिस्ट है ना. सो वो हमारी चलती रहेगी. अभी उसमें से तो एक एक करते जाएंगे और बहुत जल्दी वो कर जाएंगे. बट उसमें से हमको अपने लिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए क्या क्या चीजें अब से करनी है, ठीक है, इसकी स्क्रिप्टिंग कर लेना. ऑफ कोर्स प्रैक्टिसेस हमारी चलती रहेंगी, मैजिक बुक कहीं नहीं जाएगी कल. अच्छा, और ऑल्सो पीपल ऑन द यूट्यूब, इफ दे वांट टू ज्वाइन, क्योंकि सुबह 6 बजे लोगों की आंख नहीं खुलती है, तो कल का सेशन सुबह 8 बजे होगा. ठीक है, सबकी डिमांड के ऊपर. एवरीबडी वेक्स अप बाय 12 o'clock till 12, 1 or whatever. If you're partying or whatever, it is absolutely all right. Celebrate your New Year's the way you want to. 8 a.m. we will have the session, which is only for tomorrow, 8 to 9. Okay, and tomorrow also we will have another session in the evening. That let's figure out the time. I don't know, 9 to 9:30 या 9:45 हमारे evening का session खत्म होगा. तो 8:45, 8:45 to 9, बट पता नहीं 9 बजे मैं सो जाती हूँ. सो विल डू इट सम टाइम में भी. कल मोस्टली सबकी छुट्टी है, तो हम 6 से 7 रख लेते हैं, बिकॉज ऑफ द डिमांड दैट आई नीड टू टेक अ Q&A session. So let's do meditation plus Q&A. Meditation for 10 minutes and a Q&A. So if you have any questions, anybody, people on the YouTube or people who are live here and people on the group. So Soumya, would you take the responsibility of taking everyone's questions and asking them? Okay. Sure, ma'am. And also to message in the group that tomorrow we would be taking a Q&A, because there are so many questions, and you all can tell Soumya, and Yeah. also tell her that आपका नाम नहीं लें for some questions which are very personal. They can be anything, which is okay. I mean, nobody is judgmental. हो सकता है कि जो आपका इशू चल रहा हो, जो बहुत पर्सनल है, वो हो सकता है किसी और की लाइफ में भी, और उनको भी वो आंसर सीख करना है. ठीक है, सो आप पूछ लेना. You can we can answer the questions by the name of N or R or K or whichever. If you don't want yourself to be named, perfectly okay. ठीक है, सो यू कैन जस्ट से दैट बस वो नेमलेस है, अनोनिमस है, उनका ये वाला क्वेश्चन है. ऐसे भी आप पूछ सकते हो. एंड दिस आई कैन अश्योर यू दैट यू कैन शेयर एनीथिंग विद सौम्या. शी विल नेवर शेयर इवन विद मी कि वो किसका था. ठीक है, इफ समवन टेल्स हर दैट आई एम एनोनिमस एंड दिस इज माय क्वेश्चन, ओके, she will not tell me also उस day. और सौम्या मुझे बताना भी मत, मैं पूछूंगी भी नहीं कि किसका. Anonymous means anonymous. So there are so many things in my life also which are there in my stomach. They will die with me, when I make a transition. I never discuss all that with anyone. So that's okay. And आप please पूछ लीजिए. और we can answer that for you. We'll do it 6 to 7 because 7:15 से कल से हमारा जो चिल्ड्रंस ग्रुप का सेशन है उसका टाइम थोड़ा सा एक्सपैंड हो गया है, 15 मिनट. सो वो 7:30 to 8 होता था, अब वो 7:15 to 8 हुआ करेगा. ठीक है, बिकॉज चिल्ड्रन ऑल्सो नीड मोर टाइम, और उनकी इंटरेक्शंस एंड शेयरिंग्स बहुत ज्यादा होने लगी हैं, जिसके कारण, एंड वी वांट देम टू इंटरेक्ट एंड शेयर. सो 15 मिनट एक्सटेंड हो गया है.
ठीक है. So tomorrow 6 to 7 in the evening and morning 8 a.m. to 9 a.m. will be the study session. So in a way it will be good for me. मुझे शुरू से था कि मुझे सुबह वर्कआउट करना बहुत अच्छा लगता है. तो कल मैं 6 से 7:45 I'll do my workout in the gym. So my gym opens at 5 o'clock in the morning. So I'll get an added. So it is not because I have to sleep or something. I'll be up at 3:40 whatever. जो भी मेरा usual time है. But then just because of everyone's convenience, we are doing that. ठीक है. So now we go to the other book, Hero, by Rhonda Byrne, and Mr. Sai Prasad from Bangalore will be reading for us. So आज दोनों readers का debut reading है ना? Soumya's read for the first time and Sai Prasad sir, over to you. And दोनों ही बैंगलोर के हैं मैम, the native. Yeah. हाँ. Good morning. Good morning. First, before we start, I would like to say thanks to Rajesh Khanna Saab for introducing me to these sessions. This is my second cycle, and I had been trying. Priya knows about it, trying to get a time to talk or read the book. So this is my first this one. Good morning to everyone. Good morning. G.M. Rao. In my journey of 4 decades, it happened a number of times that things did not turn out the way we had anticipated. I did not hesitate to stop and change course with an open mind. We experienced this recently when we acquired 50% of an international energy giant for over $1.2 billion. When things were not turning out the way we anticipated, and our aspirations were not in congruence with our partners, we decided to opt out, even if it meant facing a temporary setback. However, in hindsight, and subsequently, we have more than made up. If the purity of intention is there, the universe finds a way to reward you. If your commitment begins to waver at any time on the hero's journey, through disappointment, rejection, or something that didn't go the way you thought it would go, there are times when you need to remind yourselves that you are always being moved to your dream in the way that will bring about the greatest outcome. Yeah, this is by our very own GMR, Mr. GM Rao from India, from Chennai rather. And he rules, I mean, they have the biggest airport infrastructure company. And they made several collaborations with companies that were from outside of India. 2020 में उन्होंने latest French company जो Paris based है उनके साथ किया था, again on airport infrastructure only. And so he says that we had collaborated at times with the big wigs, like really big companies, so that we can come around with the best infrastructure at the airports. सबसे अच्छे एयरपोर्ट हम बना पाए. इंटेंशन उनका बस यही था. ठीक है. तो इस चक्कर में उन्होंने collaborations किए, but it did not work out well. तो कई बार होता है ना, we start anything with a partner, the partner is not as involved as we are, or maybe you feel that थोड़ा सा कहीं पे lacking है कुछ. So GM Rao says that does not matter. There might be a setback, that can happen in everyone's life at some point of time, but that's okay. You have to feel it, heal it, get up, move forward. That is the key to growth and movement in life. And it's all right to have the setback at some point of time. But that अगर intention pure आपका होता है, so इनका intention तो बहुत clear था that he wants to make the best infrastructure at the airports in terms of the buildings, and give people an ease and comfort, in the airports. इतना आसान हो गया है सब कुछ अब एयरपोर्ट्स पे, है ना? सब पता होता है, डायरेक्शंस कहाँ जाना है, कैसे करना है, इतने सारे कन्वेयर बेल्ट्स होने लगे हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन चैनल बहुत अच्छा है.
the boards which are everywhere, the LCD, TVs that are reflecting. So सब कुछ ये इसी तरीके से इनके architects design करते हैं, and all the builders who are there responsible, to be working for their company. So this is what he has to say, that it really doesn't matter अगर intention pure है, तो universe will give you the right people, situation, circumstances, so that your intention can be fulfilled and you once again bounce back and be greater than where you were. So that is what he has mentioned here. So we are just extending our session by about 5-7 minutes today, क्योंकि वो glitch की वजह से हमने start late किया था आज. हाँ जी. Mastin Kip. As an entrepreneur, there's a term called pivoting. And pivoting basically means if it doesn't work, I'm going to pivot. That is, implement what I learned and come up with something new. And that's really what the hero's journey is all about. See what works, change what doesn't, try again, and ultimately you will get there. Yeah, as simple as that. So he says that you're constantly doing something, it's not working, change the strategy. Okay, but goal is the same. That goal is not changing. If you want to establish your company to that level, so the goal remains the same. But बीच में जैसे alignment, अगर कभी कभी हम alignment से इधर उधर हो जाते हैं, change the strategy. देखो कि if this is not working, change the strategy and do something else, like दूसरा वाला रास्ता ले लो, doesn't matter. So that is what he says, that, I've learned to come up with something new, and that's really what the hero's journey is all about. See what works. Sometimes something might work, sometimes might not work. Change what doesn't, try again, and ultimately you'll get there. So this is how it is, and this is the best way to actually move forward. But there is no sitting and sulking. We are not into that mode when something's not working out. Yeah. John Paul Dioria. Dreams change. When I started John Paul Michel Systems back in 1980 with my partner, the dream was if we could do $5 million a year, we'd each make $200,000 to $250,000. We'd be set for life. Well, when we got to that point with the size of our company, our dream changed and grew bigger. So it's important to know that once you achieve that dream, you go on to another dream. It's an evolution. There is one thing you can count on when you follow your dream through the thrilling twists and turns of your hero's journey. Your dream will never end up being smaller than what you thought. It will only become greater in ways you could never have imagined. Yeah, as simple as that. It says here that, Joe, I have learned from Abraham Hicks' books that life is meant for evolution and expansion. So obviously, there was a time when I was struggling to even make like 2 lakh a month, so my goal there was written that this is how much I want to do. And then the moment I touched that number, it expanded, it became the next and then the next. So we're constantly evolving, isn't it? I mean, like, I would pray that, okay, this year I will make 2 domestic and 1 international trip, because मेरे पास time और resources उतने ही होते थे. Okay, so but then I made 4 this year and it changed now. So this year it will be even better because I love traveling. So I've got my travel goals, I've got my money goals, I've got my health goals, and all that is to bring joy and happiness to someone else also. It's not always for me. I do the things that I love in any case. I've reached that stage where I have the freedom to do everything without thinking twice. But now the goals are also something else. So there's a constant evolution and expansion. If I could write 2 books in a year, this year I'm going to write 4. So I have learned now, like, I don't have to struggle with words and paragraphs and, the content. So if I have learned so much that I can write that book, now I will take a lesser time in doing and give people more. I don't write books for myself. It is all my knowledge that I've conjured to give it to the world. Okay, so this is how we grow and expand constantly.
So even if it is to do with cooking, you know, so even if we make like we are good at cooking, so it is like obviously you're giving so much of happiness and joy to others who love food, and food is beautiful. We all love food, right? So we all love well cooked food and a very tasty and a healthy food. So if we are growing in that direction in any which way, हम अपनी skills को और better करेंगे ना. So इस तरह से वो skills better ही होती जाएंगी. So this is how it actually works. So it is simple. So so goals expand होना, अपनी monthly annual income का इन्होंने example दिया है, तो ये said that हम $5,000 अगर कमा रहे हैं तो हम 250 billion क्यों नहीं कमा सकते, या इतने million क्यों नहीं कमा सकते हैं ना. So that's constantly increasing. So grow and evolve and expand your dreams, and that is the only way to progress in life. And that's what he says here, that this is what about hero's journey. So so it says that your dream will never end up being smaller. It is always getting bigger. Obviously, अगर अभी इतना किया तो next time आप उससे 2x करोगे या 5x करोगे या 10x करोगे. So definitely doing more and more in life and thinking more, and ask the universe that what is it that next I can do. So I think Mr. Sai Prasad will be able to do only so much today. Thank you so much and wish you a beautiful 2024. Yeah, I would like, from my side, I'd like to wish everyone a happy new year. You're the first person in that anyway. I've got only one comment which I would like to make before I sign off, like they say. Whenever we say thank you, if we can, say it with a smile, it makes a major difference. Whatever we do, whatever we talk, whatever we think about, for us and for everyone else, do it with a smile. The smile brings two things. It brings a focus into what we are thinking and what we are doing, and it radiates love. These are the two things which I think is a point. I thought we'd just like to make it. Other Thank you sharing so and all much. will come Point much later. taken. Point taken, and definitely we're implementing it. Thank you you very so much. much. Thank Thank you you very for much. the beautiful reading. Thank Thank you you. so much. Yes, He Soumya. read so beautifully, na? Yeah. Both, even Soumya. बहुत अच्छा Yeah. लगा. Thank you. और दोनों का fresh first time reading था आज. हाँ जी, madam. Yes, thank you so much, ma'am, for transforming my life this year. Thank you to each and everyone in this group for making my life so beautiful. I've been in tears since this morning. My blessings को हक से joy के tears आ रहे हैं. So how I started and how I'm ending it, it is like end of the spectrum. So I am, today there's no sharing. Today I'm really seeking all of your blessings because I'm going to start writing the book from today. Ma'am, I've completed the 555 practice like I sought out for you, and today is the first day. So I've shared this with Priyadi ki whatever I do today on 31st is how my whole year looks like for me. It's been the pattern for my whole life, and that is my strongest belief. So writing the books so that I write a lot of books as well. So thank you for giving me that dream, all of you, and especially ma'am for giving me that beautiful dream. I didn't even know I had that dream until you guys put it in front of me. So seeking each and everyone's blessing and give me the power to do the justice to the whole group and the practice that we are doing. So that is my intention with this book. So thank you so much. God bless you. And I know and I can see that you've already become the best writer that's impacting others' life, and you're writing meaningful content that changes others' lives. And use the pen that universe has given you, and let the universe flow through you when you're writing. You really need to meditate and give yourself 3 months. 31st March is your deadline. Just do it. I mean, like, it has to be super success. And guys, what Soumya is writing on, all these that she writes down, like ये जो सारा crux of every session होता है जो वो group में लिखती हैं, ये उस पे book बना रही है. She's building on that now.
So she's taken those excerpts from every session and she's building on them now through her book and letting it know to the world. People जो हमारे sessions नहीं attend कर पाते हैं, जिनके तरफ हम reach out नहीं हुए हैं, so she's taken that step to reach out to all over the globe, people all over the globe, because the book will be written in English language, so it's a universal language, everywhere, so people would be able to understand. And inshallah, that book becomes such a super success that it needs to be translated into other languages as well. So that would be done. I mean, that at that point of time, it will not be a big deal to be translating it into different languages. But the only intention is to empower others' life, to touch others' lives. And the words will flow through you. So you're just a channel that universe has chosen, Soumya. So always remember that. Yes, ma'am. Yeah. Definitely. So That all the that is best. the. I have no Thank you, doubt, thank and you I so will, all of us, I think, will be the people who will pay money to buy that book from the stands, Oh, for thank you. sure. Yes. Thank you so much, everyone. Thank you, thank you, thank you. Thank you, and be the best version of yourself. So your time starts now. You have time only till 31st March. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. है ना? From May, then we'll think of The something new else. financial year will begin at 1st April now, so you have to Yeah. finish it by 31st March. But then Yeah. Yeah. start now, and the new financial year where you will have that book. Yeah. Yeah. And it is the third month and 3 months also, no? That's why I also said it. 3 months, Alright. January, February, March. And this also happens to be a leap year. And बचपन से मैं ये सुनती आ रही हूँ कि जो चीज leap year में करते हैं ना, leap year is different and it brings a success of another level to people. And that's for all of us. So this is a leap year. It's 3 months and completion is in the third month. Ma'am, Thank leap you, year is ma'am. 29th आएगा ना February में? Like that? हाँ, Hmm. हाँ, Okay, okay. हाँ. So मैम एक thank बार you, 555 thank you. प्रैक्टिस एक बार और बता दीजिए. अच्छा, 555 प्रैक्टिस 55 टाइम्स आपको एक चीज पिक करनी होती है जो भी आपका है. सपोज आपको यू वांट टू गेट योर ड्रीम जॉब, सो थैंक यू यूनिवर्स दैट आई नाउ हैव माय ड्रीम जॉब. दैट्स इट. ये आपको 55 टाइम्स लिखनी होती है 5 दिन लगातार. तो ठीक है, मैम इसको बिना फिर डिस्ट्रैक्शन 555 के. क्यों बोलते ओके, हैं? थैंक यू सो मच मैम. 555 होती है ना 55 टाइम्स फॉर 5 days. Okay, 5 times. Okay, okay. Yeah. Got it. मैं तो मैं रोज 55 सोचती हूँ times for 5 5 days. And if you do this in Okay, the I thought. Brahm Muhurat, then the power is, I don't know, 1000x. Oh, thank you, thank you. 55 Yeah. times is doable. No, anything is doable. Yeah, anything is We doable. can Yes, expand thank our you. 24 hours to 48 Yes, hours. yes, of course. Thank you, ma'am. Thank you so much. Yes, Raman. Hello, good morning, ma'am. Good morning, everyone. Morning. I just wanted to share this 555 practice only. There was some health challenge, and I did this 555 practice. First, I listened to you on the YouTube. You sent the video, no? And then, yeah, after immediately on the 6th day, actually everything realized. I think second, third day से ही ठीक होना शुरू हो गया था. And till मतलब on the 6th day, everything was fine with that health challenge. And my second sharing is regarding the money. मनी में भी मैम मैंने एक चीज देखी है कि जितना हम देते हैं उससे बढ़ बढ़ के आता है. जब कभी भी किसी को आपने तो आई स्टार्टेड डूइंग दिस थिंग लाइक किसी भी रैंडम कभी भी जाती थी ना तो वैसे ही किसी को मतलब 3-4 नोट ऐसे ही पकड़ा देने मतलब रैंडमली ब्लेस करके ऑब्वियसली ब्लेस करके अच्छे से ब्लेसिंग करके जिसको मैं जानती भी नहीं थी या कुछ भी मतलब कोई भी आए उसको देना ही देना है. समटाइम्स यू से फूड दो या आपके जैसे घर में आते हैं वो तो आई मेक इट अ प्रैक्टिस कि हाँ फूड यहाँ. बट मनी का भी कोई आता है तो दैट हैज मेड अ ह्यूज डिफरेंस इन आवर फाइनेंसेस आल्सो. एंड आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि ऐसे मतलब अगर किसी को भी कोई फाइनेंस में थोड़ा सा लगता है तो पहले हमें देना पड़ता है फिर हमें मिलता है. जितना देंगे जितना देते जाएंगे हर एक चीज में लाइक वो आप कहते हो ना जिस चीज में हम एनर्जी अपनी डालेंगे वो हमारी बढ़ती जाएगी. तो पहले देना है
और डेफिनेटली मैम बहुत 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 चेंज आया है फाइनेंसेस में, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर द काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस and for the kind of knowledge you share with us, and the practices आपको देख के लगता है हाँ नहीं करना ही करना है, yes we have to do it, and yes, and we are finding a lot of difference in us. Thank you so much ma'am, from the bottom of my Amazing, and heart. wish you the best of health and a lot of financial growth and progress in your life and your husband's life and children. So Thank you so much. Thank you. thank you. Thank you so much. Yes, Sandhya. Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, आज तो ड्राइव नहीं कर रही हो want ना? to share. Hello. I said आज तो ड्राइव नहीं कर रही हो ना? नहीं ड्राइव नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरा एक ड्रीम जो है वो ट्रू होने जा रहा है. टुडे आई एम गोइंग टू कश्मीर. जो मैंने अपनी Oh, ड्रीम लिस्ट में लिखा हुआ था, आई एम एट द एयरपोर्ट, यू कैन सी. So I'm so oh, thanks a lot. Thank you for one wow. week. I'm going. Oh, great, awesome. खूब enjoy करना. कश्मीर तो जन्नत है वैसे भी. Yes. So I need Yeah. your blessings. Oh, you're going to have the best trip. You can share few pictures with us. Yeah, sure. है ना? Thank you. Thank you. खूब enjoy करो, खूब अच्छे से हंसी खुशी से वापस आओ. Memories लेके, moments लेके. Yes, ma'am. Thank you. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you. Yes, Priya. Good morning, and thank you so much to each and everyone जिन्होंने मेरी शायद कल की ट्रिप मैनिफेस्ट की होगी. मैंने खुद ने अपनी ट्रिप मैनिफेस्ट की है. कल की जो मेरी पार्टी थी, जो हम लोगों ने वहां पर किया, आई वॉज मीटिंग ईच एंड एवरी वन फॉर द फर्स्ट टाइम. बट मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं सबसे फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ. द कनेक्ट, द टाइम वी शेयर हियर, जैसे कि मैं आप लोगों से बात करते रहती हूँ, इट वॉज लाइक इट वॉज माई आवर फर्स्ट मीटिंग, बट इट नेवर फेल्ट लाइक दैट. एक मोमेंट के लिए भी मुझे नहीं लगा मैम कि आई वॉज अलूफ, मैं नहीं आ रही हूँ. तो मैं आई लाइक आई डोंट नो, आई हैड दिस फीलिंग, एंड आई हैड एक्चुअली मैंने अपनी ड्रीम लिस्ट में लिखा हुआ था ये. टुडे yesterday I got the time to strike that off and to add another one. So yes, thank you so much. Many of dreams have got fulfilled in just a span of just a short time. Like it's a might be a 1 year or 1.5 year में बहुत सारे dreams मेरे पूरे हुए हैं. मैक्सिमम ऑफ देम ऑब्वियसली तो लॉन्ग टर्म होते हैं ना. लॉन्ग टर्म के लिए तो वी हैव टू जस्ट अ मोमेंट गेटिंग दिस नोटिफिकेशन. यस, सो लॉन्ग टर्म के लिए तो वी हैव टू वेट फॉर दैट ऑब्वियसली, बट द शॉर्ट टर्म गोल्स हैव अकम्प्लिश्ड, लाइक आई कैन से 10 on 10. एंड दिस वन वाज अ मेजर वन. सभी को मुझे लगता था कि आई हैव मेट यू, मतलब सब सोचते हैं कि ये तो मतलब मैम से तो रोज ही मिलती होंगी. आप मैम से नहीं मिले, इट वाज अ ह्यूज थिंग फॉर मेनी. बट ये चीज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए. एंड वही मुझे लगा नहीं एक बार के लिए भी कि मैं आपसे अलग हूँ, मैं और बाकी जिनसे मिल रही हूँ उनसे अलग हूँ. बिकॉज आई हैव अ स्ट्रॉन्ग, लाइक आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन दिस वन वाला, वी आर ऑल वन. तो इस कारण से ना मुझे कभी नहीं लगता है कि अगर मुझसे कोई गलती भी होती है या किसी से अगर गलती होती है तो वी आर वन. जब हम ये सोचेंगे ना कि हम एक ही हैं, इफ दैट पर्सन इज डूइंग दिस मिस्टेक विद यू, तो यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट, है ना. तो इस तरह से. सो yesterday I met all of you, and this was I'm getting thrills now also. पता ही नहीं कैसे the universe orchestrated this whole meeting, this whole party thing as my, like, I think the universe must have written from my pen. जैसे मैंने लिखा था exactly वैसे का वैसे. I could spend time with my family also. Like मुझे था कि मैं दिल्ली जाऊं, तो मतलब they were in the transit, तो उनको लग रहा था कि मैं उनके साथ कुछ पल और बिता पाऊं. तो आई विजिटेड, बहुत ही अच्छे से मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया. और उसके बाद फैमिली के बाद फ्रेंड्स, एंड मतलब ये एक्सटेंडेड फैमिली है ही नहीं अब मेरी. मतलब मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कभी भी कि आई एम वन विद यू ऑल. कभी भी इस तरह से लगा ही नहीं मुझे कि मैं अलग हूँ और मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो पता नहीं क्या है. तो अभी मैंने इसलिए इसको ड्रीम लिस्ट में लिखा था कि मैं आई वांटेड टू फील दैट वार्मथ, दैट चार्म, and each and every individual is so loving. I felt so special being there. Thank you so much for creating this beautiful world for us, ma'am. And सौम्या की बात मैं बहुत अच्छे से, मैं ना मेरे दिमाग में सेट थी कि 30th उसको ना, मैंने कहा था तुम 31st को क्यों चुना तुमने पढ़ने के लिए. शी सेड कि देख 31st मेरे लिए ना हमेशा ऐसा होता है, 31st में अगर अच्छा जाए ना तो मेरा अगला साल बहुत अच्छा ही जाता है हमेशा. आई ऑलवेज हैड दिस, हमारे सबके मन में होता है ना कि फर्स्ट को हम लोग अच्छी अच्छी चीजें करेंगे तो आगे का साल भी अच्छा जाएगा.
लेकिन सौम्या से आई टुक दिस पॉइंट कि 31st जो है ना, वो मेरा अच्छा जाए तो मेरा पूरा का पूरा अगला साल ही अच्छा जाता है हमेशा से। तो मेरा भी 30th बहुत अच्छा गया सौम्या। ईच एंड एवरी डे इज अ सेलिब्रेशन फॉर मी नाउ। आई डोंट नो, कहीं से केक किसी और के लिए ऑर्डर करती हूँ, केक मेरे घर पे आ जाता है। इस तरह की सेलिब्रेशन चल रही है लाइफ में। सो इट्स ऑसम। थैंक you so much, ma'am, for all that thing that you do for all of us. And thank you so much. And today I'm going to write another rocking dream in my list. With all your blessings, thank you so much, ma'am. And yeah, I would like to sing a song also from Shyamji's behalf today. अच्छा, श्याम बेटे जी नहीं एक है? मिनट, मुझे भी 1 मिनट। श्याम जी नहीं है आज? दोनों का गाना सुनेंगे। श्याम जी को थ्रोट को बहुत सारी ब्लेसिंग्स करने के लिए आज ये गाना मैं श्याम हाँ जी के लिए गाऊंगी। हाँ जी श्याम बेटा, जी की तरफ हाँ से, जी, श्याम जी जस्ट के 1 लिए। मिनट दीप्ति हाँ सविंदर Sure, ma'am. आंटी। जी। जैसे बोलूं मैं अभी? हाँ हाँ बोलिए, फिर प्रिया का मैंने कहा गाना। प्रिया की बात तो नहीं बीच में नहीं, रहेगी। प्रिया ने गाना गाना है आंटी, तो आप बोलेंगे नहीं, और आपके बाद प्रिया प्लीज मैम। विल सिंग अ सॉन्ग। हाँ जी, ओके प्लीज आंटी आप ओके। बोलिए। हाँ जी, जैसे आपने बोला ना 31st ऑफ मतलब लास्ट डे ऑफ द ईयर, तो हमें तो भाग लग गए। मेरे छोटे दामाद का जन्मदिन है, शिमिंदर का, जैसे आपने विशेष भी हाँ, दी हैं। मैंने विश तो भेजी थी। हाँ जी जी, और ढेरों विशेष चाहिए आपकी, सभी के लिए, शिमिंदर के लिए भी। और रात को हमने खूब बड़ी पार्टी दी उसने। तो ऑफ कोर्स सारे रिश्तेदार आए थे, उनके फ्रेंड्स आए थे, हम भी गए। और शमिंदर ने बोला था कि जो आपको देर लगेगी, जैसे हम लोग जल्दी सो जाते हैं, तो आपको छोड़ देंगे। लेकिन हम पूरे टाइम पे बैठे रहे। जैसे उसने, आज का दिन है उसका जन्मदिन का, तो 12 बजे केक काटा। उसके बाद भी सेलिब्रेशंस हुई, मैसेजेस वगैरह सिंगापुर से भी बहुत आए, वीडियो मैसेजेस वगैरह सब ने हमने देखे। और खूब एंटरटेनमेंट थी पार्टी में। लगा था जैसे कोई मिनी मैरिज ही है उनकी। तो मैडम, सॉरी बेटा, हम 2 बजे घर में आए, तकरीबन 2:30 बज गए होंगे, या 2:15 सोने में। अब फिर मैं 4 बजे फिर उठ गई। तो अरे वाह, ये भी दया आपकी तो है। डिसिप्लिन, हैट्स ऑफ। हाँ जी हाँ जी, ये दया है एक किस्म की परमात्मा की। और शिमंदर ने भी कल बोला था कि मैं गोल्फ खेलने तो जाऊंगा ही जाऊंगा, चाहे देर हो जाए चाहे सवेर हो जाए। तो आप सभी लोगों की आशीर्वाद चाहिए उस फैमिली के लिए, शिमंदर के लिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस शमिंदर। वो वैसे भी बहुत लार्ज हार्टेड इंसान है, वैसे भी वो वैसे ही है। जितना टाइम मैंने उनके साथ सिंगापुर में 2 दिन बिताए थे शमिंदर जी जी के साथ में, ही इज सो अमेजिंग, आई मीन लाइक, और इतने चिल्ड आउट। कुछ भी हो रहा हाँ है, जी, सब ठीक हो जाएगा, वो अपने सब ही ठीक हो किस्म का, जाएगा, सब ठीक। हाँ जी, बच्चा है, बहुत बड़ा दिल है उनका। बहुत और बड़ा। ब्रॉड, मतलब हर एक की मदद करता है अपनी तरफ से, दोनों में अभी। Yeah, no, he will, whatever he does, he will definitely get the returns of that into his life in a जी very big way. So, जी, yeah, थैंक यू सो मच thank फॉर you गुड so much. विशेस। Thank you. Yes, over to you, Priya. Unmute myself. यस मैम। या सो ये मैं गाना मैं बैक जा रही हूँ उसके लिए, शायद श्याम जी इस तरह के रहे होंगे पहले। सो दिस सॉन्ग इज फॉर हिम एंड फॉर एवरीवन। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। तो यही था श्याम जी के मन में, तो प्रियंका चल रही थी। और बस वही है, द लवली कपल। आई वाज सो हैप्पी टू मीट देम yesterday एंड बहुत बहुत अच्छा लगा। सो यस श्याम जी, lots of magic dust and beautiful sparkles of golden love of all arts। आप बहुत ही जल्दी एकदम सुरीले से अगले संडे को thank you हमारे लिए Priya तैयार for हो staying. हम जाइए। अब वीकडे में संडे कर लेंगे किसी दिन, हाँ, जब आपका गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो। Yes ma'am, यस यस, definitely ma'am, thank you. है ना, गाना तो ड्यू हो गया, एंड थैंक यू गाना तो प्रिया बनता पिचिंग इन है। फॉर हिम।
एंड I'll ये send a बिल्कुल ऐप्ट सॉन्ग है कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बट मंजिल कहीं और होती है, तो आप वहीं जाते हो ना। सो अगर ma'am, पापा I'll send a सोचते हैं कि recording आप, today. हाँ जी, I'll send a earlier recorded song today on the कल group. Oh, रितु yes. खन्ना कल That रितु will be a खन्ना ने delight. मेरी रिकॉर्डिंग करी थी Thank you so सॉन्ग much. की। and Priya Taneja, thank you for your bouncing back and adding joy and laughter. She added a lot of laughter to my time with her yesterday after everyone went. So Priya, सब लोग चले गए थे, फिर प्रिया की गाड़ी नहीं आई थी, तो हम काफी देर तक प्रिया के लिए वेट कर रहे थे. Then I thought I just told Priya, प्रिया नेहरा की गाड़ी की वेट कर रहे थे. मेरे साथ दोनों प्रियास थी, प्रिया नेहरा और प्रिया तनेजा. सो प्रिया नेहरा की गाड़ी काफी देर बाद आई, तब तक हम तीनों इकट्ठे बैठे हुए थे. जब प्रिया नेहरा चली गई तो उसके बाद मैंने प्रिया तनेजा को बोला कि मुझे 2 मिनट अपने लिए न्यू ईयर प्रेजेंट खरीद के आना है अपने आप के लिए. सो आई वेंट टू H&M एंड देयर शी सेड नहीं नहीं मैं भी साथ आती हूँ. And she kind of, but it was a time full of laughter and craziness. So I'm so happy, Priya Taneja, आप किस मूड में आए थे और किस मूड में वापस गए, इतने हंसते खेलते. So it was lovely having you yesterday, and I actually was laughing a lot at the craziest of the things that you actually did. I can't even share on this group. So, but then, yeah, अगर thank you, रिकॉर्डिंग नहीं है तो कर दो। and wish you no recording हो रही है, और वैसे भी कुछ चीजें पब्लिक नहीं होती हैं. और आप हमेशा वैसे ही हंसते खेलते रहो और अपने आप से और अपनी जिंदगी से प्यार करो, है ना. सो Yes. अब सी यू एवरी डे, मेक दिस डिटर्मिनेशन. आपका येलो कार्ड मेरे पास रखा हुआ है, उसकी कंडीशंस अप्लाई थी. ठीक है। ठीक And है, ma'am, special ऑल thanks to राइट. Ina Meena. Ina Meena को बहुत मीना सारा मीना तहे दिल तो से मैं, शुक्रिया. इट वाज लाइक, मैंने आज सुबह उठ के, जब मैं उठी तो 3:30 बजे मुझे सबसे, क्योंकि रात में तो कुछ कुछ कर मुझे बहुत नींद आ रही थी तो मैं सो गई थी. एंड आई हैड टू रीड अ चैप्टर ऑफ दिस थिंग. मैंने सुबह उठ के सबसे पहले पहले उन्हीं को मैसेज किया था that thank you, that they are like really amazing. It was so much fun and everybody is Yes, looking ma'am. so good. अब हम में से किसी को वीडियो बना के डालना पड़ेगा बिकॉज बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स हैं. सो देखते हैं, वो भी मीना ही करती है ये वाला काम. शी मेक्स अ वीडियो आउट ऑफ द इवेंट्स एंड she'll post it in the group so you can see the pictures and the laughter that everyone had. So it was really amazing and I'm मैम so आज happy काउंट that आज हाँ, मॉर्निंग काउंट माई ब्लेसिंग में सबने ईना मीना के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स सब लिखी है। बहुत सारी, absolutely. Thank you They so deserve much. it. Such a They make it warm so Thank you special. everybody. hospitality. Very warm और रिटर्न hospitality. गिफ्ट्स भी थे, और रिटर्न गिफ्ट भी किए हुए थे. आप पर्ची उठाओ और आपको वाला गिफ्ट मिलेगा. मेरा रिटर्न गिफ्ट में लिपस्टिक आया, तो मुझे लिपस्टिक मिली गिफ्ट में, रिटर्न गिफ्ट में. तो सबको गिफ्ट्स मिले, एक एक जने ने पर्ची उठा के अपने रिटर्न गिफ्ट लिए. All वाह 25. Yeah. Beautiful. एकदम And बहुत which ही is अच्छा totally fresh from नाइस their fresh आइडिया। वाला clean side. clean. We had not pulled in any money for that. It was totally from their side. So they make it like that every time, something different. So which was wonderful. बट मैम Yeah. नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा पहले से प्लान करना, लास्ट मिनट पे होता तो और भी कितना कांड पहले से लगता। कर सकते हैं? 15 दिन तो पहले किया था. इससे पहले नहीं हो पाता. ओ मैम वी वर नॉट अवेयर, ये कहाँ था, मेरे को तो अच्छा, पता ही नहीं नहीं नहीं, चला। 15 दिन. अच्छा, you're not in that group. Please give your name to anybody from Delhi. मीना को ही दे देना, वो आपको ग्रुप में ऐड कर देगी. एक दिल्ली का अलग I'll ग्रुप add, है. ma'am, I'll add her. Poonam Anand, I'll add her. हाँ कौन सी हाँ, मैम? अच्छा, प्लीज. आई जो वाज दिल्ली नॉट के आप अवेयर अपना नाम, एक्चुअली। फिर आप पूनम पूनम मोदी को दे दीजिए. मीना को, कोई भी आपको ऐड कर देंगे. उस ग्रुप में कुछ कुछ चलता रहता है, वैसे भी फोटोज आती रहती है. कुछ भी. थैंक यू ठीक है. मैम। सो थैंक you so much and have a beautiful Thank you. 31st and see you all very very fresh tomorrow at 8 a.m. Okay, and then Thank you. again at 6 p.m. Thank 8 you. a.m. ओके मैम, 6 थैंक यू Thank p.m. you सो both so मच live एंड थैंक यू sessions. And please एवरीबॉडी। Thank you give so in your much, ma'am. questions to Soumya. Yeah. जितना जल्दी, बिकॉज वो स्टिपुलेटेड टाइम में ही क्वेश्चंस ले पाएंगे ना. उसमें से भी 10 मिनट्स की मेडिटेशन है, तो मतलब 50 मिनट्स के क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे. लाइक दैट. Ma'am, I want to say a line. हाँ हाँ. वो जुबां कहाँ से लाऊं, जिससे करूं मैं शुक्रिया, वो कलम कहाँ से लाऊं, जिससे लिखूं मैं शुक्रिया,
मेरे जन्म जन्म के साथी, मैंने अब तो तुम्हें पहचाना, खुद कृष्ण बनकर तुमने मुझे अर्जुन बना दिया है, अर्जुन बना दिया है, वो जुबां कहाँ से लाऊं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर गाना, आप इतना अच्छा गाते हो। अभी तक तो गाया नहीं था। आवाज भी इतनी सुंदर, पर ब्यूटीफुल एंड दर्शन इवन दे द देते, वर्ड्स। हाँ हाँ दर्शन जी। दे देते, दर्शन दे दो प्रभु जी। कंचन जी। दे दिए। आपको बोलने की देर थी। ये मैजिक क्यों है कि आप कुछ भी मांगो आपका पूरा हो जाएगा। Even I want to say a word for you. ओके। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना, करोड़ों की जिंदगी के लिए, सूरज रे जलते रहना। That's it. मैं इससे ज्यादा गा नहीं पाऊंगी बिकॉज अभी अभी उठे, I've joined just 5 minutes back. नेवर माइंड, बट यूट्यूब पे जरूर सुन लेना दर्शना। एंड थैंक यू सो मच। मैं रोज जब सूरज को थैंक यू बोलती हूँ तो मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि अपनी थोड़ी सी लाइट मुझे भी दे देना, सो दैट आई कैन ऑल्सो इल्यूमिनेट द वर्ल्ड। सो दिस इज टोटली इन अलाइनमेंट। इनफैक्ट मैंने आज भी ये बोला था सुबह उठ के, जब मैं बालकनी में गई थी सुबह सुबह 4 बजे, जब मैं 9 प्लैनेट, सन, मून और 5 एलिमेंट्स का थैंक यू करती हूँ अपनी लाइफ का। And so I always tell this to the sun, all 365 days of the year, that thank you for giving me your light so that I can also illuminate the world. And things are just happening. So yes, I will take care of what instruction you have for me, for sure. You are And illuminating. Ma'am, never you are let you illuminating down. our world. Yeah, Illuminating, never and let we you want down. you to continue like this. We love you. We love you Continue. so much. Yes, Thank you, Love you, ma'am. Thank you for आपको। everything. चलता रहेगा। Thank you so All much. work for you. You know, Thank Thank you so you, much. and have a beautiful last year of the year with so much love, laughter, and gratitude and in heart. Okay, कोई grudges नहीं, कोई कुछ नहीं, सब इसी साल पीछा जो भी चीज ऐसी हुई है जो अपनी पसंद की नहीं थी, सब पीछे छोड़ दो। ठीक है, अर्थ भी बोल रही है कि आज से मैं नया साइकिल शुरू कर रही हूँ सन के अराउंड घूमने का। तो आप मेरे साथ साथ चलो, मेरे अलाइनमेंट में रहो और देखो कि हाउ मैजिक अनरेवल्स इन फ्रंट ऑफ आवर आईज। So thank you so much and see you next year. Thank you, Thank you. ma'am. Yes. Thank Wish you. you all a very Bye. happy Happy new New Love year. you, Year. love you, Happy New love Year. you. Bye. Thank you. Love Love you. you, Happy everyone. New Happy Zindagi. New Year. Bye bye. Happy कल New करेंगे। See Year. you tomorrow at Love you, 8. everyone. Today we are नए साल में celebrating 2023, है ना? In one Yes, day we have to celebrate a lot of 2023. yes. Yes, tomorrow. Thankful. Bye bye. Thank you. Bye-bye. Bye Thank bye.